Good morning, students. So we have already discussed about chapter number 11, that is light, and I hope all of you read the chapter 2. And now today let us solve all the book exercises. Okay, first of all, open your book at page number 76. We have a small quick check here. Let us do that. First one, the sun is a natural source of light, isn't it, children? Sun is a natural source of light or not? Yes. So we are going to write it as true. The bulb is an example of a non-luminous source of light. So is a bulb a non-luminous source of light? लाइट बल्ब कोई नॉन ल्यूमिनस सोर्स है क्या? हमने ल्यूमिनस सोर्सेस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस भी डिस्कस किए थे. व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस लाइट? बट हियर द बल्ब इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस दिया था, सो इट इज नॉट करेक्ट. सो राइट इट एज फॉल्स. विंडो पैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. यस, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को पास ऑन करते हैं. दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो अपनी थ्रू लाइट को पास कराते हैं. सो ऑब्वियसली विंडो पैन इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू राइट इट एज ट्रू. Shadow is formed when light falls on a transparent object. अगर light pass on हो रही है तो then why the shadow will form? No, light अगर कोई opaque body के ऊपर आया तो shadows form होते हैं. So it is a wrong one. So write it as false. And now just read all the summing up and word bank which is given in your book. Go through the lines, then solve these exercises. Then it will become more easy for you. Select the correct options. The first one, materials through which light can pass are called. जिसकी थ्रू लाइट पास होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक एंड ग्लास. जो मटेरियल्स की थ्रू लाइट पास ऑन करते हैं, द मटेरियल्स विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. सो टिक ऑन द ट्रांसपेरेंट. अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन. शैडो कब फॉर्म होता है? द लाइट इज टर्न्ड ऑफ. बिना लाइट का तो शैडो फॉर्म ही नहीं होंगे. एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द फ्लोर. इट्स अ रॉन्ग वन. द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कभी भी लाइट रे जहाँ से ट्रेवल कर रही है वो वे को, दैट पर्टिकुलर पाथ को अगर कोई ऑब्जेक्ट ने ब्लॉक कर लिया जिसकी थ्रू लाइट जा नहीं पाएगा तो शेडोज फॉर्म होते हैं. सो टिक द सेकंड वन. थर्ड वन, dash would be a shady place to stand on a sunny day. Sunny day means when there is a good amount of sunlight. So on a sunny day, which is a best place to stand, which is the best place to stand so that we can get the shadow? River? No. Middle of the cricket path? No. The area under a tree? Yes, because trees give us shade, that's why it will be the correct area for us to stand. When the sun is behind you, your shadow is. आप जब सन अपने पीछे होते हैं, बिहाइंड मतलब बैक साइड, देन आपकी शेडो कहाँ फॉर्म होते हैं? शेडोज ऑलवेज फॉर्म ऑन द ऑपोजिट साइड. सो आपके पीछे सन सोर्स ऑफ लाइट है तो शेडो विल जस्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे फॉर्म होता है. द लास्ट वन, शेडोज मेड बाय द सन आर शॉर्टेस्ट. सन से जो भी शेडोज फॉर्म होते हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट कब होते हैं? वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द टॉपिक ऑफ शेडोज दैट शेडोज, द लॉन्गर साइड ऑफ द शेडोज आर फॉर्म्ड इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, एंड एट द नून, मिड नून में क्या होता है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट शेडोज फॉर्म होते हैं. सो वी हैव टू टिक एट मिड डे व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड. नून में जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है तब अपनी शेडोज शॉर्ट फॉर्म होते हैं. Is it okay, children? Now let us move to the fill-ups that are given below. Dash help us to see things. In order to see anything, what we need light. टॉर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सोर्स ऑफ लाइट. टॉर्च नेचुरल सोर्स है या ह्यूमन मेड सोर्स है? इट इज अ ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट. नाउ light takes less than 100 millionth of a dash to reach your eyes. Light travels very fast, we know that, and light takes less than 100 millionth of a second. मतलब एक सेकंड में कितना फ्रैक्शन है वो. 100 millionth means it will just happen. जैसा आपने आइज क्लोज किया और ऑन किया, इससे भी ब्लिंकिंग ऑफ आइज से भी फास्टली होता है ये. नाउ डी, डैश ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एलो लाइट टू पास थ्रू देम. कौन सा ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट को पास ऑन नहीं करते हैं? दे आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द डैश,
and dash are of different shapes and sizes. Depending on the position of the sun, shadows are of different shapes and even sizes also. Now question number 3, match the column. So group A and group B are there here. So shadows, let us see the apt option for shadows. Human made night travels in straight line night. The third one are shortest at noon. shadows हमेशा नून में मिड नून में जब सन अपने ओवरहेड पे होते हैं शॉर्टेस्ट शैडोज फॉर्म होते हैं. बल्ब इज अ ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर प्लास्टिक शीट, क्लियर प्लास्टिक शीट जो है उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम, मतलब विच एलोस अ पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम, नॉट कंप्लीटली बट अ पार्ट. Light which travels in a straight line. So write the match the following. Now the last one which is given here is, look at the pictures, note the position of the sun and draw the shadows accordingly. आपको पोजीशन मेंशन करनी है. देखो सन की पोजीशन देख के आप बता सकते हो. इधर मॉर्निंग में है तो शैडो सन लेफ्ट में है तो राइट साइड में ऑपोजिट वे में आपको शैडो खुद को ड्रॉ करनी है. ओके. एंड आफ्टरनून शॉर्टेस्ट होते हैं एंड इन द इवनिंग अगेन सन इज इन दिस साइड, सो इन द ऑपोजिट साइड द शैडो विल बी फॉर्म्ड. Is it okay children? So do all these exercises in your book itself and now turn your page and we can see at a glance. Okay, at a glance आप देख सकते हो. So you have to fill that on your own. As you have done the summing up and word bank, you can easily do that. So that will be your homework for today and thank you.